हेलो एवरीवन, हेलो, अ न्यू डे। न्यू ब्लॉग। आज हमारा लास्ट डे है मॉन्ट्रियल में। वी आर हेडिंग होम। तो जाने से पहले हमने सोचा कि क्या लास्ट चीज जो है बच गई हमसे जो कवर करनी चाहिए। तो हमको याद आया कि बायोडोम जो है, अंदर से तो जाएंगे नहीं, बाहर से ही आपको दिखाते हैं, वो खूबसूरत सा है। तो वही गोल सा, तो वही कवर करते हैं। तो वहीं आए हुए हैं हम लोग, बायोडोम पे हैं अभी आपको दिखाते हैं पीछे बायोडोम कैसा दिखता है। ये देखिए ऐसा है। अब आपको एक क्लियर व्यू देता हूँ, देखिए। Here you go। ये बहुत बड़ा है। अगर एंट्रेंस देखेगा एक बार जाके चेक करते हैं, आजा। The Biosphere in Montreal is a remarkable architectural landmark and environmental museum located on St. Helens Island. Originally constructed as the United States Pavilion for the 1967 World Expo, the Biosphere has become an iconic symbol of Montreal's commitment to the environmental awareness and sustainability. Inside the Biosphere, visitors can immerse themselves into thought-provoking displays, multimedia presentations, and hands-on activities that encourage learning and engagement. Beyond its educational offerings, the Biosphere also serves as a center for environmental research and innovation. It collaborates with scientists, researchers, and organizations to advance knowledge and find solutions to pressing environmental challenges. Check this out. With its striking architecture and its mission to promote ecological consciousness, the Biosphere stands as testament to Montreal's dedication to environmental stewardship. And also, please don't get confused between Biodome and Biosphere. We generally recommend you going to Biodome instead of Biosphere because Biodome is more appealing than Biosphere. ये देखिए हमारी ब्यूटीफुल वाइफ, वो उधर दिखाई पूरा एकदम वेस्टर्न लुक के साथ, एकदम यूरोप की। हमारी यूरोपियन लड़की नॉलबारी से लिया है हमने। उस तरफ दिखाइए। और ये देखिए हमारे पीछे वाटरफ्रंट एंड द व्हील ऑफ लव, व्हील ऑफ फॉर्चून। और वहाँ पे वो सर्किट द सोलेल हो रहा है। सर्किट द सोलेल इज एन एक्रोबैटिक सर्कस। हम लोग बोलते हैं सर्कस बड़ा डिमीनिंग हो जाता है, बट लाइक इट्स एन एक्रोबैटिक वन। हाँ जी भैया, तो कैसा लगा आपको मॉन्ट्रियल का ट्रिप? अच्छा था, वेरी गुड। मतलब हम लोगों ने बहुत कुछ कवर किया और हम लोगों ने ऐसा मतलब एक भी स्पॉट नहीं छोड़ा। हाँ, हमने लास्ट डे तक हम लोगों ने लास्ट डे के 5 बजे तक हम लोग, अभी यहाँ से 5 घंटे की राइड और है घर जाने तक की, 5-6 घंटे की, बट स्टिल हम लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा, सब कवर कर लिया है। तो दिस वाज द लास्ट स्टॉप, हम लोगों ने ये भी कवर कर लिया है। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू टोरंटो। अब ये हमारे जो पार्टनर्स इन क्राइम है उनसे भी हम जरा पूछे, हम आगे आ रहे हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को मॉन्ट्रियल एंड क्वेबेक सिटी? Awesome experience. We're glad that Dave and Pampy are here. So it's been an awesome trip, great company. Good, awesome. Honey? Is this honey? It's maple syrup. Maple syrup. Maple syrup. The bottle looks so cute. Thank you. And now we are heading back to Toronto. It will be again a hell of a ride because अभी 5 घंटे का राइड है, स्टॉप्स ले लेके पहुंचेंगे। एंड इफ यू लाइक आवर ब्लॉग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।
और शेयर, प्लीज शेयर। हम आपको ऐसे दिखाते रहेंगे, ऐसे छोटे मोटे जो जगह है यहाँ पे टोरंटो में, वो भी हम भी घूमेंगे, आपको भी घुमाएंगे। तब तक के लिए आपको पार्टिंग सीन्स ये देखिए। So this is the Montreal waterfront and this is my beautiful wife. From both of us, see ya till the next destination. Next destination. Next yes. destination and next vlog. Yeah. चलो, bye bye.